what are the different types of sleep apnea or sleep disorders? For in today's context, I will just say sleep disordered breathing. Sleep के साथ breathing में क्या difficulty problem हो सकता है. So दो main है. एक है obstructive sleep apnea के साथ अगर patient को हो रहा daytime sleepiness, तब उसको बोलते हैं obstructive sleep apnea syndrome, OSAS. और एक है OSA. दोनों conditions अलग हैं. This is even more dangerous than obstructive sleep apnea. Morphine, Yes. fentanyl, उनका abuse. Basically what we call as drugs. Drug addiction में central sleep apnea is common. Central sleep apnea dangerous इसलिए है because आपका पूरा brain से signal ही जाना बंद हो गया. हम जब रात को सोते हैं the respiration is completely automatic and उसके बाद अगर वो ज़्यादा continue हो गया, it continues for around 30 seconds or more. Sleep study actually means हम रात को सो रहे हैं. स्लीप स्टडी बस एक स्टडी है जिसमें हम जब रात को सोते हैं उसको नींद को एनालाइज करते हैं. हम देखते हैं नींद में क्या क्या हो रहा है. बॉडी रेस्ट ले रहा है तो उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा. स्लीप के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग के लिए वी हैव वेरियस टूल्स. सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टूल इज स्टॉप बैंग. स्टॉप बैंग में एस फॉर आपका स्नोरिंग है, टी फॉर आपका टायर्डनेस है, ओ फॉर do you wake up feeling sleepy even after having slept 7 to 8 hours during the night? Do you snore? Do you feel breathless? Are you disturbed during the day and feel sleepy and drowsy during the day? Well, sometimes I do. Just this morning, my daughter was telling me that, Mom, what time did you sleep? And I told her normal hours, 12:30. So she said, you're still looking sleepy. And a thought came to my mind, maybe I need to get myself tested. So today, here we are with Dr. Razaqur Rahman, a sleep specialist. He is an RPGST certified sleep technologist, an ex-army man, and someone who's working in the space of deducing and finding out if people are suffering from sleep apnea. Welcome, Doctor. Doctor, to begin with, can you give us a little introduction about yourself and how did you move to this space? journey was something not completely planned. I did my MBBS and MD from Guwahati and basically from Assam, presently settled in Indore. So after my MD way back in 2013 in physiology, I first took up teaching for a few months. Then I answered the call of the uniform. So I thought serving country was the best thing to do as a physiologist. I always was in awe of the uniform. So I joined army in 2013 December as a short service officer. And almost after 10 years, that included 2 tenures in Siachen Glacier, working in the research lab of DRDO and Army collaboration at Leh. One of its kind lab which is present in Leh. It's known as High Altitude Medicine Research Center, HAMRC, working in Base Hospital Delhi during COVID times. And also part of a medical college faculty there. I thought it's finally time for me to move forward. So in 2023, I took release from Army as a Lieutenant Colonel and classified specialist in physiology. Joined medical college in Indore, Sri Aurobindo Medical College. I'm still a faculty there, associate professor in physiology. And there, basically, the first time I worked in sleep was when I was in Leh. We had the level 1 sleep lab there of Somnomedics. And even though it was not functioning properly, my senior there, Colonel Dharmender, he's still in army. He's right now in Mumbai, posted in Mumbai. Okay. So, sir got the lab operational. We started a project on sleep. We have a lot of problems in soldiers who are posted in high altitude. There are sleeping issues because of oxygen. There's less lack of oxygen. So sleep issues are there. This was studied very properly in that sleep lab at Leh. And then I came to, when I joined this institute, I found that they also had a same level 1 sleep lab of Philips. And luckily at that point of time, I organized a CME on sleep, which was basically Dr. Tripat sir. He's a doyen. He's also a physiologist himself. And I could say one of the doyens of sleep medicine in India. So sir organized a lot of courses. So I enrolled myself in that course. And with great difficulty, when with support from my wife, because sleeping in the lab
with the patients, doing sleep studies, keeping family aside. It's sacrificing time to the Sacrificing, family. yeah. So I'd like to use this platform to give a big thanks to my wife, because it's possible only because of her, and obviously my department also, because my HOD, she would not, if her support was not there, a physiologist getting to work in a sleep lab is something unheard of. And only in AIMS, 1 or 2 AIMS in India, and our institute is where physiologists have worked. And I've tried, I mean, this lab which was lying almost, you can say we had no technicians there. I reinvigorated it, got a lot of support from the management, and it's now working. So we do a lot of sleep studies there. Since my joining, I've done more than 100 learner sleep studies in an institute where the studies are not covered under any scheme, neither Ayushman. People have paid money from their pockets, and we have CGHS scheme. So the rates are very low, and the study journey continues. We do both diagnostic titration, and it's level 1, the gold standard. We have level 2 and level 3 also, which are home-based studies, but we in our institute do only level 1. And by virtue of industry collaboration, I've also done continuing 2 research projects on sleep apnea using home sleep devices. Okay. So that's about me. The journey is still continuing. The awareness is very poor, and the treatment is even tougher, because to make patients understand that you are having sleep apnea, what exactly it is, how it can affect you, and what you should do. Getting them buy a CPAP machine on rent also for a very low price is something a bit of an ask, but starting to enjoy it. Okay. So, hello everyone. This is Nadia from Slumber Sense Global. You have just heard our guest introduce himself. He has a long years of working in the field. And if you're ready to hear what sleep studies and how the treatment for that condition works, please stay tuned with us. So, doctor, without any further ado, what do you feel, basically, what is the universal principle that is applied to getting good sleep? You sleep properly on time, maintain a proper sleep routine, and maintain a sleep hygiene. Sleep hygiene means we don't use this thing 30 minutes before going to sleep. We don't use a screen, smart screens off. Depending upon your age, suppose we are all working, students are also going to school, they need mobiles, but try to make it a habit. No smartphones at least 30 minutes before sleep. Maintain a proper routine, proper time of going to bed, and then waking up in the morning. If it's Sunday, a bit late you can sleep, but not more than 30 minutes of extra sleep in Sundays or in half days. But otherwise, sleep. No afternoon naps. If you want to go for afternoon nap, max to max 15 to 20 minutes power nap. That's a power nap. Then it's fine. You sleep more, you are gone. And again, obviously, taking care of your diet. Not a heavy diet in the night. Something light, as we all said. Heavy breakfast, then a lighter Eat like a king, breakfast like a king, and dinner like a pauper. Exactly. Okay. And don't take so much of stress in the night. If possible, try to use some sleeping aids. Some people use earphones to just listen to very soothing music. Yes. That can be ASMT, right? That is what the music is called. Yeah, I mean, I would not. Just take a sleeping aid. Okay. And sleep in a comfortable environment. But the most important thing affecting the people right now is the screen time. Decrease it. So, your advice, do you follow it yourself? You can say, not that much because of my work profile, but I'm trying to break it down because I know the sleep is affecting me. I mean, the screen is affecting me. At least 10 to 15 minutes, I just drop it. If not 30 minutes, 10 minutes before going to sleep. And some people have a habit of drinking coffee before going to sleep. That is a big no-no. Coffee So or no caffeines. no before. caffeines. How many hours before? At least after afternoon, after 4 p.m. afterwards, no caffeine. I can't do it, but I can always advise try to take it as much of less coffee. If at all you want to go for some tea, a light tea around 5 o'clock in the evening. And suppose you are sleeping at 10 o'clock, then fine. Till 5 o'clock you can still maintain. But coffees are a big no-no, especially black coffees, dark coffees, cappuccinos, no. Okay, so audience, no tea, no coffee after 5 o'clock. A big task, Yes. but the effect will start showing. Okay. So, going forward,
How do you explain sleep apnea in simple language? In something like that, that a layperson would be able to understand. गले का नली बंद हो गया सोते सोते, that's it. Means we have a thing called upper airway tract. Airway जब होता है लंग से शुरू होता है, it goes all the way through the throat and it comes to our nose and the mouth. So upper airway tract जो है उसमें एक एरिया है behind the tongue का जो बेस है, suppose this is the base of the tongue के पीछे is the airway. तो जब आप सो रहे हैं तो ये ब्लॉक हो जाएगा और जब जग गए तो ये खुल जाएगा. तो जब सोते वक्त से भी ब्लॉक हो जाएगा. अगर ब्लॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, दैट इज एपनिया, मीन्स एयर का फ्लो बंद हो गया. इट इज नोन एज कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ एयर फ्लो. हाइपोपनिया मीन्स ये आपका पार्शियली ब्लॉक हो गया है एंड उसके साथ आपका ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो भी फॉल हुआ है. सो 3% से ज़्यादा अगर फॉल हो गया, सपोज किसी का सोते वक्त SpO2 था 97. SpO2 मीन जो हम SpO2 प्रोब लगा के जो देखते हैं 97 90 दिखा था, किसी का 97 है. अगर वो 94 से नीचे हो गया, उसके साथ अगर सांस जो हवा का आवागमन है अगर वो भी कम हो गया, that means he's having hypopnea. So SpO2 is basically the oxygen content in your blood, yeah. right? Soluble oxygen content in the blood depends on the hemoglobin levels. अगर किसी का hemoglobin बहुत कम है तब भी वो कम आ सकता है, या फिर किसी का ब्लड में ऑक्सीजन ही कम है, अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन कम जा रहा है, कब जा सकता है? जैसे मैंने बोला सोते सोते अगर सांस रुक गया तब हो सकता है. Correct. और ये जो सांस रुकता है ये इधर कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है. दोनों डेंजरस है. Okay. दोनों डेंजरस है. इनकम्प्लीट बाद में होता है, सॉरी कंप्लीट बाद में होता है, इनकम्प्लीट पहले होता है. लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी किसी का काम शुरुआत में ही पूरा कंप्लीट. ओके. सो हमने सुना है कि जो लोग स्नोर करते हैं, कैन दे बी डायरेक्टली said to have sleep apnea? See, there are two things. So snoring does not mean that you will have sleep apnea. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और अगर किसी को स्नोरिंग नहीं भी है उसको भी स्लीप एपनिया हो सकता है. So we will आपके पास कभी ऐसे पेशेंट आए ऐसे हैं? बस हमारे पास आए हैं. I had a 6 feet 2 inch पेशेंट. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बट उसके पास खाली स्नोरिंग था और स्नोरिंग भी 3 महीने से हो रहा है, उससे पहले कुछ भी नहीं था. बट वाज ओनली कंप्लेंट वाज स्नोरिंग. तो हमने उसका स्लीप स्टडी किया, हैविंग सीवियर स्लीप एपनिया. एंड वो एक दिन में नहीं हो सकता है, वो बहुत दिन से हुआ होगा, बट स्नोरिंग उसका 3 महीने शुरू हुआ है एंड उसका DNS भी था. सो अगर किसी का स्नोरिंग है, समवन इज हैविंग स्नोरिंग, अलॉन्ग विद दैट इफ सपोज ही इज हैविंग डे टाइम स्लीपीनेस, मीन्स दिन में भी नींद आ रहा है, थकावट आ रहा है, उसके बाद सपोज बंदा रात को सो रहा है, ही स्लीपिंग इन द नाइट, देन हिज पार्टनर सीज दैट ही वेक्स अप इन द नाइट, चोकिंग हो गया, ऐसा लगा कि सांस रुक गया और उसको उठ के बाहर जाके खिड़की खोल के दरवाज़ा खोल के सांस लेना है. दैट्स अगेन ए डेंजर साइन. एंड सपोज उस पेशेंट का स्नोरिंग भी है एंड हाइपरटेंशन भी है, सो दो दैट इज डेंजरस. दैट मीन्स ही नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. उसको स्लीप स्टडी के लिए हमको देखना है. तो स्नोरिंग एज अलोन हैबिचुअल स्नोरर्स इज नॉट अ डेंजर साइन, बट अगर ये 3 साइन हमको मिल गया then he has to be investigated. It's a danger sign. Okay. So, what are the different types of sleep apnea or sleep disorders that So, are see, that you sleep can disorders help तो us बहुत सारे हैं. For in today's context, I will just say sleep disordered breathing. Sleep disordered breathing. Sleep के साथ breathing में क्या difficulty problem हो सकता है. So, 2 मेन है. एक है obstructive sleep apnea, एक है central sleep apnea. Obstructive sleep apnea के साथ अगर पेशेंट को हो रखा है डे टाइम स्लीपीनेस, तब उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, OSAS. और एक है OSA. बहुत टाइम पे डॉक्टर्स को रिलेट करके बताते हैं, इंटर रिलेट करके बताते हैं, बट हमेशा दोनों कंडीशंस अलग है. दोनों अलग है. एक में एडिशनली डे टाइम स्लीपीनेस होना है, बहुत लोगों का नहीं भी होता है, बहुत लोगों का होता भी है. सेकेंड हमारा हो गया सेंट्रल स्लीप एपनिया. दिस इज इवन मोर डेंजरस देन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. जनरली ये US पॉपुलेशन में इट्स सीन इन द स्टेट्स. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे आपका ओपियोइड एब्यूज बहुत होता है. ओपियोइड्स मीन्स आपके जो मॉर्फिन या फेंटेनिल, उनका एब्यूज, बेसिकली व्हाट वी कॉल एज ड्रग एडिक्शन में सेंट्रल स्लीप एपनिया इज कॉमन. सेंट्रल स्लीप एपनिया डेंजरस इसलिए है बिकॉज आपका पूरा ब्रेन से सिग्नल ही जाना बंद हो गया. हम जब रात को सोते हैं तो द रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, तो ये आपका ब्रेन ही कंट्रोल करता है. तो अगर ब्रेन का सिग्नल नहीं गया तो ऑक्सीजन तो रुक गया पूरा, एंड उसके बाद अगर वो ज़्यादा कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूस फॉर अराउंड 30 seconds और मोर, पेशेंट कैन डाई ऑल्सो. So that is why obstructive apnea is much more dangerous. Sorry, central sleep apnea is much more dangerous. Obstructive भी dangerous है, और obstructive में क्या आपका सांस
ऊपर के लिए अटक गया है, ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पेशेंट जग जाएगा, उसके बाद वो खुल जाएगा। तो चांसेस ऑफ मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी बहुत है। मोबिलिटी मीन्स उसका डिफिकल्टी तो बहुत होगा, मोर्टेलिटी जाके बाद में होता है। बस सेंट्रल एपनिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। एंड दोनों का सिम्टम्स सेम है, ओह, एकदम सेम सिमिलरिटी प्रेजेंटेशन लेके आएंगे। okay, हमको मालूम नहीं चलेगा अनलेस एंड until we go for a sleep study. okay. So how is obesity related to? Is obesity one of the signals? Yeah, obesity is one of the signals. से sleep के लिए हमारे पास screening के लिए we have various tools. सबसे most commonly used tool is stop bang. Stop bang में S for आपका snoring है, T for आपका tiredness है, O for observed apnea, B for BMI. So anyone whose BMI is more than 30, उसको हम 1 point देते हैं. So it becomes a risk factor for sleep apnea. Okay. And there is a term called obesity hyperventilation syndrome, OHS. Okay. उसमें पेशेंट का अगर BMI more than 30 है, उसके बाद अगर उसके बॉडी में ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बॉडी में जमा हो रहा है, देन ही फॉल्स इन दैट कैटेगरी। एंड ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग है। इट्स नॉट दैट वी डायरेक्टली गिव हिम अ CPAP, उसका बाईपैप चाहिए, इट हैज़ टू बी क्वाइट अ लॉन्ग एंड थोड़ा सा इंटेंसिव ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स का बाद में जाके लंग फेलियर हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ हिज ओबेसिटी पार्ट ही विल हैव फैट डिपोजिशन बिहाइंड हिज नेक। Yes. सो इस पेशेंट का एयरवे ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है बिकॉज ऑफ हिज वेट, Correct. और उसका ऑलरेडी उसका अगर स्लीप एपनिया अगर डेवलप हो गया तो हम उसको CPAP भी देंगे। ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम अगर वो वेट लॉस नहीं करता है, इट विल नॉट हैव दैट मच ऑफ गुड इफेक्ट। Effect. So you said there is obstructive sleep apnea, one is central sleep apnea, and any There is other. one more thing called mixed apnea. Yeah. Mixed apnea के पेशेंट को बस स्लीप एपनिया सेंट्रल भी है और ऑब्स्ट्रक्टिव भी Oh, so है। they have the symptoms of both. नहीं, they have symptoms of both and they both are present. Means initially present patient को होगा central sleep apnea, फिर suddenly उसके बाद उसका what you call the airway has opened up. Sorry, the breathing fat has come. तो उससे जो diaphragm अपना जो respiratory muscle है उसका मूवमेंट शुरू हो गया है, बट उसका जो एयरवे है that has remained blocked. So उस पेशेंट का ब्रेन से भी सिग्नल नहीं आ रहा है और उसका एयरवे भी ब्लॉक है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ब्रेन से सिग्नल आ गया तो जो उसका रेस्पिरेशन का जो मेन मसल है डायफ्राम यहाँ पे जो रहता है, इट हैज स्टार्टेड मूविंग, बट Just below the lungs, right? below the lungs, but with the rib cage, but उसका airway will be closed है. So in that case we go for nomenclature उसका होता है mixed apnea. Okay. So treatment उसका भी same है. Weightage is given more to the central apnea part. As per my reading, there are more than 88 different kind of sleep conditions. There are more conditions, neural disorders है, बहुत सारे हैं. Okay. So, what is the percentage that, since you have been in this field for a very long time, अपने इंडिया में what is the percentage of people that are, what you feel, are affected actually by sleep apnea and are not diagnosed? Because ये समझ में आ रहा है कि लोग snore करते हैं, but like you said, around 30% of the population के पास sleep disorders का कोई ना कोई complaint होगा ही, and उसमें से around 10% would be having sleep apnea. okay, so that's a sizable number. हाँ, and because of our weight, Indian population में आजकल obesity is an epidemic here. Yes. Hypertension is an epidemic here. तो उसमें होना बहुत is very common to have this kind of problems. Okay. So, you said 30% of the population is affected, right? How are the hospitals and, are we really prepared to cater to that kind of population which is actually suffering from the condition? If you Are ask we me in today's date? 2 years back, no. अभी भी अगर आप बोलेंगे तो I would still say in a very critic way I'll say we are still no, but optimistically बोलेंगे yes, we are taking the right steps forward. Right step forward in the sense कि at least we have people who are becoming aware. We have structured programs. At least one structured program is run by Tripat sir. We have programs run by other institutions where actually, people are getting trained. But training is one thing. Getting yourselves certified is different. India में RPHGT आज के डेट में only around 70 or 80 technicians are there for a country of 1.4. So many. Yes. 140 billion, 140 billions, right? Yeah, 1.4 billion, ना? No, Sensex होना है अभी. हाँ. It's soon to happen. We know the new numbers. Northeast में, I am from Assam. Assam does not have an RPHGT. Northeast में RPHGT कोई नहीं है.
आई थिंक देर इज मेरे अलावा मैं तो आसाम में बेस्ड भी नहीं, आई एम बेस्ड आउट ऑफ इंदौर. सो एंड इन इंदौर वी हैव ओनली थ्री RPHGTs, and rest of the country also it is less. So why is RPHGT important? Because it's a certification which gives us to report and interpret a sleep study, and that report is accepted throughout the world. We are trained in scoring, diagnosing, interpreting everything. So that thing is there, not there. Level 1 sleep labs are very costly. Getting it installed is around 25-30 lakhs का उसका cost है. उसको ROI आने में बहुत time लग जाएगा. So what we have now is something which is prevalent throughout the world. We have level 3 labs. But again, level 3 labs उनका reporting कोई structure नहीं है. किसी को भी हम दे देते level 3. We don't see कौन सा patient का क्या age है. Everyone is given a level 3 study. Report भी आएगा कोई, I mean interpretation is also not done by someone who is qualified. So we have to work a lot on that. Okay. Diseases are there. Infrastructure is coming up. At least in metros are very well equipped. Tier 1 cities like Ahmedabad, Hyderabad, they are also doing quite good. But when it comes to Tier 2 and Tier 3, we have a lot to do. A lot of work still to do. needs to be Lot done. of work to do. Right. Now, in the 30% that you were talking about, what would be the percentage? Is it only that older people get sleep apnea, or we have No, children, it is present throughout. teenagers? It can. It's one What is disorder. your experience? It's one disorder which can happen both in pediatrics, in young adults, middle age, old age, everything. Old age after 50 the muscles lose their tone, muscles ढीला हो जाता है, तो स्लीप एपनिया होने का चांसेस वैसे ही बढ़ जाता है. माइल्ड टू मॉडरेट आपको मिल ही जाएगा. बट अगर यंग एज में किसी को मिल गया, बट देयर आर सर्टेन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, प्रेयर-विली सिंड्रोम, उसके बाद डाउन सिंड्रोम भी है, उन बच्चों का स्लीप एपनिया कॉमन है. देन यंग एडल्ट्स का भी होता है, obesity है. Then we have besides sleep apnea we can have other diseases like narcolepsy also. Narcolepsy is a disorder, neurological disorder. It occurs in generally people whose age is around 17 to 18 to 20 years. Okay. उसमें भी होता है. So it's not a disease कि आपका ये खाली एक एज में होगा. It can happen to any people of any population, any age group, males, females, किसी में हो सकता है. Females का जनरली 50 years के बाद फीमेल्स का भी प्रेवलेंस बढ़ जाता है. प्रेग्नेंट लेडीज में भी होता है. सो इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट पॉपुलेशन, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिनेंसेस, लेस पीपल कम टू अस ऑफ अनकॉमन एज ग्रुप. होगा तो होगा ही मैम, बट आता कम है अपने पास. So, sleep apnea के patients basically, if suppose somebody is facing and they know, they are aware that sleep, जैसे हमारी condition ले लो, I sleep alternate days maybe. Okay. So, if I want to approach, which doctor should I go to? Ideally मैम depends upon your presenting complaints. अगर आपके पास इंडिया में स्लीप क्लिनिक्स में अगर आप जा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है. स्लीप क्लिनिक इज़ वन सच कॉन्सेप्ट जिसमें सब है, where you have both the a pulmonologist, an ENT surgeon, a dentist, everything under one roof. अगर वो नहीं है, then you should at least approach a pulmonologist first, or if you are a loud snorer with sleeping issues, an ENT surgeon. Okay. But keep in mind that in whatever doctor you go, to a pulmonologist or to an ENT surgeon, a sleep study is something which you should do if you are having problems which we just discussed, snoring. So now coming to sleep study, you've rightly driven the conversation towards the sleep study. Most of the people, would fear कि ये sleep study, एक तो पहला awareness नहीं है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि sleep study जैसा भी कुछ होता है. Okay. So what sleep study actually means? Can you explain to us? जैसे किसी को भी समझ में आए. हम रात को सो रहे हैं, स्लीप स्टडी बस एक स्टडी है जिसमें हम जब रात को सोते हैं उसको नींद को एनालाइज करते हैं. हम देखते हैं नींद में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. हम जब सोएंगे रात को बॉडी रेस्ट में, तो बॉडी रेस्ट में तो उसका क्या होगा, उसका नींद इधर पतला नींद से गहरा नींद में जाएगा, सपना देखेगा. क्या देख रहे हो तो पता नहीं चलेगा, और हमको ये मालूम चलेगा कि बंदा सो रहा है कि नहीं, और कौन सा गहरा नींद में है कि पतला नींद में है, सपना देखने वाला नींद में है कि बिना सपना देखने वाला नींद में है. उसके बाद हम देखेंगे बॉडी रेस्ट ले रहा है तो उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा. कितना कम है वो हम देख सकते हैं. उसका ऑक्सीजन भी कम होगा बॉडी में. जितना ऑक्सीजन हमारा जगते वक्त होता है अराउंड 97-98, दैट कैन कम टू अराउंड 93-94 ऑल्सो. दैट इज़ फाइन. इट शुड नॉट गो बिलो 90. तो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स हमको मालूम चलेगा. उसके अलावा कौन सा हम जब रात को सोते हैं, इधर हम पीठ के बल लेटेंगे या फिर करवट लेके लेटेंगे, वो हमको मालूम चलेगा.
नींद में अगर हम कुछ चल फिर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट यूजिंग अ स्लीप स्टडी। तो बेसिकली नींद में जो भी होता है नींद में उठ के बात करना, वो एबनॉर्मलिटी है ऑब्वियसली। उसके बाद कितना बजे सोया, कितने बजे उठा, सांस कितना बार रुका, सांस का आवागमन ठीक है कि नहीं, हार्ट रेट कैसा था, और नींद कैसा था। तो वो बेसिक चीज़ हमको मालूम हुआ। जब हम नींद में जो भी हमको होना चाहिए बॉडी में फिजियोलॉजिकली वॉट एवर इज हैपनिंग, दोज आर थिंग्स विच यू रिकॉर्ड इन अ स्लीप स्टडी। इट इज़ ऐसा नहीं कि हम उसके अंदर कुछ सिरिंज नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हम बॉडी में जो भी लगाएंगे कुछ पैचेस जैसा लगा देंगे, लगा के उसको हम देखेंगे। तो इसमें कोई डरने वाला बात नहीं है। कुछ स्लीप स्टडी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वायरें लगा देंगे, हाँ, तो फिर हम वायरें लगाने से सोएंगे करंट, कैसे, वायरें लगाने से इट विल करंट बी नहीं सो आएगा। अनकंफर्टेबल। वायर लगाने से करंट नहीं आएगा। जो बेसिक स्लीप स्टडीज़ है उसमें वायर्स तो बहुत लगता है। इसके चक्कर पे थोड़ा सा कंप्लायंस भी कम था। आज भी आप जाओगे तो पीपल विल हैव सम अमाउंट ऑफ इश्यूज। सो वी हैव, आई मीन देयर आर थिंग्स लाइक वायरलेस डिवाइसेस भी आ गए हैं, या फिर हम एक मास्क जैसा लगवा रहे थे, कैप जैसा लगवा रहे थे, जिससे थोड़ा सा वायर्स बाहर अटकेगा नहीं। आई मीन इट विल नॉट डैंगल एंड देन द पेशेंट कैन स्लीप नॉर्मली। और डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उसमें जो भी वायर्स है वो किसी करंट के साथ कनेक्टेड नहीं है। उसको हम कैमरा में देखते रहते हैं। कोई भी स्लीप लैब में आप जाओगे, मैं लेवल 1 के बारे में बता रहा हूँ जो हॉस्पिटल में है। So, coming back to that, या we understand that there are 4 different kinds of sleep studies, right? Level 1, level 2, level 3, and level 4. Can you elaborate a little on the sleep study patterns? 1 means first gold standard, it is done in hospital. हॉस्पिटल सेटिंग में लोग पेशेंट आएंगे, देयर इज़ अ डेडिकेटेड स्लीप लैब विच इज़ अ बेड। पेशेंट को उसमें हम सुलाएंगे। ही गेट्स हुक्ड अप ऑन द इलेक्ट्रोड्स एंड देन देयर इज़ अ कैमरा। वीडियो कैमरा में टेक्नीशियन जो है वो बगल में बैठा रहेगा, आई मीन आउटसाइड द रूम इन अ कंसोल रूम, एंड ही विल मॉनिटर द पेशेंट। सो इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हमको मालूम चलेगा अबाउट द स्लीप क्वालिटी। ईईजी होता है उसमें, ईजी मीन्स ब्रेन का वेव्स के बारे में हमको मालूम चलेगा। देयर आर इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द ब्रेन, there are electrodes placed for both the eye movements. इसलिए चाहिए because we have 2 different type of sleep, a deep sleep and a light sleep. Now, Deep sleep, as we are at that, I'm sorry to cut Yeah. you, but what are the stages of sleep? yeah, see, there is stage 1, stage 2, stage 3 and REM. Stage 1, stage 2, stage 3 are NREM, non-rapid eye movement, जिसमें the eye movement do not occur. Rapid eye movement is those that sleep when the eye movements occur. ब्रेन से कुछ चेंजेस होता है, सिग्नल्स आता है, बिकॉज ऑफ विच द आई मूवमेंट्स विल ऑकर, दैट इज रेम मूवमेंट। रेम स्लीप इज ऑल्सो नोन एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। मीन्स उसमें आप अगर हम जो फाइंडिंग्स है, टिपिकल फाइंडिंग्स विल बी दैट ऑफ द पेशेंट हु इज अवेक, हिज आइज आर मूविंग अ लॉट, बट वो स्लीप में है, वो सपना देख रहा है, एंड उसका मसल का टोन एकदम कम होता है। तो स्लीप अपने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने इज वेरी कॉमन इन रेम स्लीप। एनआरईएम स्लीप स्टेज 1 लाइटेस्ट है, उसके बाद स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। स्टेज 2 सबसे स्टेबल स्लीप है, उसमें कोई इवेंट्स नहीं होता है, ऑक्सीजन एवरीथिंग इज मोर स्टेबल। स्टेज 3 इज द डीप स्लीप बट एनआरईएम। तो स्टेज 3 में हम जो भी सपने देखेंगे हमको याद नहीं रहता है, एंड स्टेज 3 में सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, और स्टेज रेम में यू विल गेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो लेवल 1 में हमको मालूम चलेगा, लेवल 1 स्टडी में वी विल गेट टू नो हिज स्लीप स्टेजेस, कौन सा स्टेज में है, कितने बजे वो सोया, कितने बजे वो जग गया, कितना बार जगा, ऑल दोज थिंग्स स्लीप क्वालिटी के बारे में मालूम चलेगा। देन देयर आर 2 electrodes, sorry not 2 electrodes, 2 sensors placed below the nose which will detect his apnea and hypopnea. Apnea means सांस पूरा रुक गया या 90% से ज़्यादा फॉल हो गया, hypopnea 70% से ज़्यादा फॉल हो गया। Along with that there is also decrease in oxygen saturation of 3%. सो दोनों एक साथ होना है, या फिर कोई एराउजल है। एराउजल इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर, जैसे गाड़ी जाता है स्पीड ब्रेकर से गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ सकता है, एराउजल इज समथिंग लाइक दैट। एराउजल आ गया तो ही कैन नॉट गो फ्रॉम लाइट स्लीप टू डीप स्लीप, ही विल स्टे इन लाइट स्लीप ओनली, डीप प्रोग्रेशन में नहीं जाएगा। एराउजल इज अ मार्कर ऑफ डिस्टर्ब स्लीप क्वालिटी। स्लीप एपनिया में भी निकलता है एराउजल्स अ लॉट, और समटाइम्स यू गेट एराउजल्स इन पेशेंट्स विद इंसोम्निया, उनको भी डीप स्लीप में नहीं जाता। समवन हु इज टेकिंग अ लॉट ऑफ ड्रग्स, some psychiatric drugs or non-psychiatric drugs, उनका भी arousals कभी कभी आता है। So that thing is given only in a level 1 or a level 2 study. Okay. So we get apneas, hypopneas, arousals तो हमारा sleep के साथ आएगा। Then we get information about the ECG. Level 1, level 2 में ECG के लिए भी लगा रहेगा। ECG में जब पूरा 12 लगाते हैं वो नहीं लगाते, we just install 2 electrodes, modified electrodes लगाते हैं।
देन वी हैव 2 बेल्ट्स चेस्ट में लगाते हैं, जिसमें एपनिया से ऑब्स्ट्रक्टिव सेंट्रल एपनिया के बारे में मालूम चलेगा. देन वी गेट SpO2 प्रोब. दिस इज़ वेरी कॉमन, सब दिस इज कंपलसरी. अगर किसी ने लेवल 1 स्टडी किया SpO2 प्रोब नहीं लगा, उसका स्लीप स्टडी होगा ही नहीं. उन्हें स्लीप के बारे में मालूम चलेगा. And lastly would be sensors in both the legs, which will give us an information whether his limbs are moving or not. So level 1 में हमको मालूम चलेगा about his sleep quality, his respiration quality, apnea hypopnea है कि नहीं, his heart rate, any heart rate कम हो गया था क्या, ज़्यादा हो गया था. And lastly would be the limb movement. The limb movement is important because there is a disorder called PLMS, periodic limb movement of sleep. And something called restless. Restless leg syndrome. Restless leg Is it the syndrome, same or no, is restless leg syndrome जो बंदा जब जगह रहता है, that is RLS. और वो RLS, he is an incontrollable urge of moving the legs. They itch basically. Yeah, and then during the evening वो थोड़ा सा कम हो जाता है. Okay, so RLS as the RLS बाद में जाके PLMS हो सकता है. So you're saying that जो restless leg movement है वो दिन में रहता है. हाँ, वो जब बंदा जगह रहता है, that is known as RLS. Oh. And PLMS is periodic limb movement of sleep. तो RLS जाके PLMS भी हो सकता है, कभी कभी कोरिलेट भी होता है. So that is only detected in a level 1 और level 2 study. Level 3 में मालूम नहीं चलता है. So level 1 gold standard. RPSGTs are trained to certify level 1 studies. Level 3 तो रहेगा बाद में. Level 2 is same like that of a level 1, but ये घर पे होता है. तो level 1 में there is a problem called first night effect. पेशेंट लैब में आके सोएगा, OIS लगा के हॉस्पिटल में. वो नाम सुने बहुत लोग डर जाएंगे मुझे क्या क्या कुछ तो नहीं हो सकता है. सो वी गो फॉर अ लेवल 2 दिन. लेवल 2 घर पे होता है. लेवल 1 में एडवांटेज क्या है कि सपोज पेशेंट का थेरेपी चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, तो ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड इन अ लेवल 1 लैब. लेवल 2 में वो नहीं हो सकता है. लेवल 2 में हमको बाद में देना पड़ेगा. So along with the sleep study, you can start the treatment immediately in a level 1. Oh, okay. That is known as split night. तो 2 घंटे के लिए, that we can always discuss later. Basically you're monitoring him completely, right? Including therapy also. Okay. And level 2 में सेम चीज़ होता है, बट लाइव मॉनिटरिंग नहीं होगा. इलेक्ट्रोज आके लगवा देगा टेक्नीशियन, सुबह आके निकाल देगा. डिसएडवांटेज वही है कि अगर कोई इलेक्ट्रोड निकल गया, सम इलेक्ट्रोड कम्स आउट, देन वी विल नॉट नो. Then next morning when the technician comes, when we find some electrode single missing, we'll have to go for a repeat study. That will increase the costing part. Correct. अगर दोनों नहीं करना चाहते हो, suppose you don't want to go for a level 1, level 2, then there is level 3. But level 3 में हम तभी करते हैं if there is high pre-test probability. High pre-test probability means when a patient comes us with problems of sleep apnea, history, yes. We take a proper history. We do a scoring. Stop bang or an ESS. If stop bang is more than 4, ESS is less than 10. If more than 10, patient is hypertensive, then he is having snoring, daytime sleepiness. His probability of having sleep apnea is very high. Then we go for a level 3. Okay. Level 3 we get everything except the sleep staging. Sleep staging नहीं रहता है and limb staging नहीं रहता है. Limb में नहीं रहता है. So we'll get to know about his position, कौन सा position में patient सोया है, what apneas he was having. Oxygen saturation, heart rate, and we don't get the sleep time. We get the thing called total recording time. Those sleep studies के लिए there is the most basic index is the AHI. That is apnea hypopnea index. कितना apnea और hypopnea कितना है? Index. हाँ, apnea कितना आया, hypopnea कितना आया, divided by total sleep time. अगर पर्सन बंदे ने सपोज 6 घंटा सोया है, that will be around 6 into 360 minutes. And suppose apnea आया, उसका hypopnea है 100. So 100 divided by 360. So that is how we take out the index. Okay. So any index more than 5 is abnormal. अगर AHI is more than 5 with symptoms, then it is known as obstructive sleep apnea. AHI more than 15 without symptoms is again OSA. तो symptoms होना है अगर AHI is more than 5 है. 15 से ऊपर विदाउट सिम्टम्स भी हम बोल देंगे उसको AHI है. तो स्लीप एपनिया कैन कम टू यू इन 3 different presentations. One is he's snoring, second he's having daytime sleepiness, and third most dangerous asymptomatic. कुछ भी नहीं है पेशेंट का. पेशेंट आया आपके पास, आया हाइपरटेंशन लेके आया, वेट गेन हो रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा थकावट ऐसा लगता है, स्लीप अपने आपने स्लीप स्टडी कर दे, यू फाउंड दैट हिज AHI इज more than 15. So then that makes us clinches the diagnosis. We have to go for treatment. Correct. So AHI more than 30 severe. एक ही ट्रीटमेंट है उसके लिए, CPAP machine, PAP therapy, CPAP और BiPAP. AHI 15 to 30, 16 to 30 moderate. Again treatment is CPAP
or you can go for some drugs. Nowadays we have semaglutide, the new wonder weight loss drug. Yeah. It is thought to Manjaro. Monjaro and what is the other one? Ozempic. Ozempic. Yeah, there's a would lot of be, fad on that. Yeah. And third would be How anything. safe are those? I'll just come into it. So, Okay. and less would be the mile will be between 5 to 15. So, 5 to 15 and 16 to 30, we have a thing called mandibular devices also. Yes. That's where dentist comes into the role. He applies a certain device on the lower jaw. Jaw comes a bit forward, and the airway opens up, and that gives us an idea that will decrease the severity of sleep apnea. The airway becomes patent. But then again, in all these three cases, we can use CPAP or BiPAP because that's the gold standard. It does not have any side effect, provided it is used for adequate time in adequate days. And as you asked, Ozempic, it is thought to low. I mean, it did decrease weight, and weight has a direct correlation with sleep apnea. But again, these drugs need time. They will take at least 5 to 6 months to work. Suppose someone is having a sleep apnea, AHI of around 60, his weight is around 130, his BMI is 40, we give him a Ozempic. That will obviously bring down his weight, but at least 6 months it will take for the OSA to go. So in those 6 months, we don't give him a what, we have to give him something. So in that, we have to give him a CPAP. Side by side, we also see how much his the AHI has come down. And if he's using Ozempic, sometimes the pressure which we give, it is thought to give, I mean, the requirement is a bit low compared to a normal person. Normal pressure person without using those drugs. Those drugs have side effects, which still been studied. And suppose someone stops it after 6 months, that's what I was then again going there on will to. be a rebound increase of weight. So Okay. if you think that So there's nothing guaranteed that if you're having it and you stop taking it, you're going to be what weight you have come down to, right? We don't know exactly, and it's people have increased weight once they've stopped the machine. And again, the sleep apnea will come and rebound will happen. This time will be much more severe. So continue using the CPAP. We do a follow-up. Do the follow-up in the clinic every month. See how much it has improved. Then adjust the pressures accordingly. So basically, there's nothing to fear about going for a sleep test, No, right? Absolutely no. It is one of the safest tests because it does not involve any prick, no invasive thing. It is all non-invasive. Sometimes we go for blood tests, but that's in very advanced cases. People who are having lung failures, whose carbon dioxide levels have gone up. That happens in very complicated cases, but not in every patient. In very mild patients, in very few patients only we do. And you are informed by the doctor that this is what we are going to do. Okay. So the treatment part now, we have understood what sleep studies are. So we have 1, 2, 3, and 4. Yeah, 4 I didn't mention. 4 is the cardiorespiratory. It is the basic one. There you have just something like a device is there, handheld device, something like a watch with a probe, SpO2 probe, and this gives us an idea about the SpO2 levels and the heart rate levels. So it's a cardiorespiratory study done in hospitals generally before a surgery. There are certain devices which you use this, which function as a level 4 device, but they use a different technology known as PPG. Okay. The tone in the blood vessels increase or decrease. The blood vessels become generally smaller or big depending upon the oxygen burden. So they use that in indirect way, and then they do the sleep staging. It is comparable in patients with moderate to severe. But now not giving the complete picture, accurate, right? not absolutely accurate. We have to at least depend on at least a level 3, if not a level 3, a level 1. Okay. How about these devices that we wear, like the Apple Watches, Samsung, the rings that have come? There is a device. How good and how efficient are they to give you what tell you? Apple Watch is you can say the FDA. It is FDA approved when it comes to a screening device for sleep apnea. Okay. So if suppose Apple Watch says that you might be having sleep apnea, go to first thing is not go to a device manufacturer for getting the CPAP. First go to a sleep lab or a doctor who is at least having a sleep lab. Get yourself tested, then go for the therapy. Sometimes people will use a Apple Watch. It shows that you might be having sleep apnea. Directly I go to the vendor or I go to a shop, get a CPAP, start using it. That's the worst thing that you can do to yourself. No, you need to go to a specialist to understand why the sleep apnea we have to make condition is there and how it is treated. It has to be streamlined. That is what is done in the countries like US, Gulf. But in India,
we're still to go into that phase. Hopefully, in the next few months, we can be at that, if not months, years, obviously. Okay, so to our audience, whoever is listening to us now, what do you think should be the first step that they should take, in understanding their sleep or improving their habits of sleep? First, you exactly assess about yourself whether are you having sufficient sleep or not. Depending upon the age, sleep requirements will come down or go up. So if you are old, you will go to bed late. I mean, you have to go to bed early and you'll wake up early also. If you are of a pivotal age group, if a child is in the age group of around 13, 14, he will go to sleep late and he will wake up late also. But that is normal. We cannot change it. Yeah. Then you need to at least fix a hygiene at what time you are sleeping, what time you are waking up. Don't go for any afternoon naps, and see that if you are waking up in the morning, whether you are fresh or not, and if you are married or if you are sleeping with someone, your sister or brother, at least ask them whether you are having any snoring or not. Yes. So at least those are a few things which you can do. And then rest of the things we can, always with age. And there are certain scoring questionnaires. There's this questionnaire known as Stop Bank. Yeah. If you are hypertensive and diabetic, at least fill that questionnaire once every month. You'll know exactly where you stand. And when you fill it up, you need to also take the help of your partner, because snoring, whether you are there or not, You wouldn't know. you will know it yourself. Correct. Okay. So where the treatment comes, you have advised that you first go to a proper doctor, a sleep technician, start with a pulmonologist, right? Pulmonologist is the best, or ENT and dentists? Depending upon the reports. Okay. If But the it's- reports will come only once you go to the doctor, right? Yeah, you can So go which to. doctor should I would a person suggest going start? to a respiratory medicine specialist first. Respiratory medicine He's a specialist. pulmonologist. Okay. And then suppose if it's not accessible, at least go to an ENT surgeon who has an expertise in sleep. Okay. Not every ENT surgeon who works in sleep, they have their own different domains. There are a few doctors who are more into sleep surgeries, and if you can find someone like him, it is better. But whosoever you go, ensure that if you are going with a sleep study, that complete sleep study is being done. Correct. So, advice is do not jump into self conclusions using the devices that are available, your Apple Watches or the Rings or the Samsung Watch. Go to a person who has knowledge about the subject, right? Take proper advice and then move in for a sleep study so that your treatment starts right. And I'd also like to add, suppose you are going to a pulmonologist and the sleep study has been ordered. After that, at least try to consult an ENT surgeon. You have to rule out certain things in your nose. If the septum is deviated, अगर हड्डी का नाक का हड्डी तेरा है, tonsils बड़ा हुआ है, गले का जो अंदर का रास्ता है अगर वो छोटा है, एयरवे जो है, तो वो ENT सर्जन के अलावा दूसरा कोई नहीं बता पाएगा आपको. So at least make it a habit कि sleep apnea, consult as ENT surgeon, and along with that pulmonologist, obviously वो तो go to person है, उसके पास जाना ही जाना है आपको. Okay. So where treatment is concerned, you said you can go in for a CPAP therapy, Or a BiPAP. or a BiPAP therapy, or there are mandibular devices. Anything else? Positional devices. How about these? There is a lot of fad, a lot of people wearing, especially where people are running on the roads, and you see them wearing those nasal dilators. Those are nasal dilators. Nasal dilators is fine. I mean, when we are running, suppose for example, when we are breathing air very fast, because of this high velocity of air intake, sometimes some people have allergies because of which the nose gets blocked. Congestion hota hai. So if you're using those strips, it is thought that the airway remains broaden हो जाता है. तो उसके लिए the airway entry is better. But then again, you remember आपका जो sleep apnea है, sleep apnea का blockage यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है throat के tongue के पीछे, around the throat. तो retropharyngeal retroglossal area, pharynx के पीछे और टंग के पीछे वाला एरिया, तो उसमें तो डायलेटर्स काम नहीं करेगा. सो या अगर किसी का नेजल ब्लॉकेज है जिसके चक्कर पे आपका थोड़ा सा हाइपोपनी आ रहा है, उसमें एपनी नहीं है, हाइपोपनी आएगा, वी कैन यूज दोस, बट मोर ऑफ प्लेसिबो मींस ले रहे तो फायदा होगा. एग्जैक्टली. रनिंग के लिए स्टिल आई कैन से द फिजियोलॉजी इज देयर, बट फॉर स्लीप एपनिया तो फिजियोलॉजी ऐसा कुछ है नहीं. हाउ अबाउट टेपिंग द माउथ? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट and read lot of ads I have seen that you can tape your mouth and you'll be comfortable and there'll be no sleep apnea. But medically मैम इसका तो कुछ है नहीं. We have a thing called chin strap. Chin strap यहाँ से यहाँ लगाते हैं, but that is we use only when using
CPAP with a particular mouth, with a particular mask, and suppose a person is a mouth breather. Okay. उसको बंद करने के लिए लगा दे. माउथ टेपिंग करने से ओके, इफ यू टेप द माउथ यू आर ब्रीदिंग विद योर नोज, बट if the nose is deviated, septum is deviated, हड्डी टेढ़ा है और नाक ब्लॉक है, तो बेचारा वो कहाँ से सांस लेगा, तो ले ही नहीं पाएगा, उसका मुंह ने अपने टेप कर दिया. सो कॉमन सेंस है कि वी शुड नॉट गो फॉर. पता नहीं, I felt that is something that is very dangerous. So something that's exactly like common sense says that we should not go for things which is not untried. CPAP, BiPAP, mandibular devices. Exactly. There's a thing called positional therapy. The new technique. Positional therapy. स्लीप अपने किसी पेशेंट का पार्टिकुलर पोजीशन में होता है, बैक में या फिर राइट या लेफ्ट में. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच विल नॉट अलाउ यू टू स्लीप इन दैट पोजीशन. आप उसी पोजीशन में सोगे जिसमें आपका सांस खुल जाता है. जनरली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में दिस इज यूज पोजिशनल थेरेपी. सो वी आर आस्क्ड टू मेक हिम स्लीप ऑन द लेटरल साइड या राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल और ऑन अ सुपाइन पोजीशन. देयर आर सर्टेन मैट्रेसेस, एक बॉल होता है, वी पुट इट बिहाइंड द बैक सो दैट यू डोंट स्लीप ऑन दिस साइड. So those are things which have been tried and new techniques have come. Pillows bhi hai. So with sleep study 1, all these things can be detected. हाँ यार. Sleep Your study positional also will be everything. detected. Sleep study right? 1, 2 and 3 तीनों में डिटेक्ट होगा. 3 में खाली आपका स्लीप का स्टेजिंग नहीं होगा एंड लिम्ब मूवमेंट नहीं होगा, बट यू गेट टू नो अबाउट दिस. एंड उसमें स्लीप स्टडी 3 में यू गेट अ टर्म कॉल REI. इट्स नॉट AHI, इट इज REI. उसमें क्या होता है, टोटल रिकॉर्डिंग टाइम. बिकॉज हमको तो स्लीप के बारे में तो मालूम नहीं चलेगा, सही है. तो हम रिकॉर्डिंग टाइम मालूम चलता. सपोज यू आर स्विचिंग ऑन द मशीन एट 10 o'clock in the night, switching off at 8 o'clock in the morning. So total recording time will be 10 hours. But in that 10 hours, suppose हमने रात को 10 बजे पेशेंट को सुला तो दिया, but he slept at 11 o'clock and he was woken up at 6 o'clock. फिर उसका मशीन बन के रात को सुबह 8 बजे. तो actually he slept for only around 7 hours. Yes. But machine is giving a recording of how much? 3 hours more. So idea, I mean, उसका same REI is अपने प्लस अपने divided by total recording time. तो level 3 क्या करता है, अंडर डिटेक्ट करता है. अच्छा. अगर किसी का AHI 100 है, it's always advisable to go for the higher one. Higher one. But in Indian context, with the limited resource settings, level 3 is also good. अगर level 3 में कोई डाउट है, then obviously we ask him to go for a level 1. उसके बाद लेवल 1 में वी कैन डू इन लैब टाइट्रेशन. टाइट्रेशन मीन्स हम CPAP लगाते हैं. तो CPAP FF का मेन आइडिया क्या है कि प्रेशर लगा के सांस का नली जो है उसको खोल देते हैं. The CPAP means when we are breathing in, inspire and expiring, the pressure remains same. BiPAP inspiring, the pressure is more, expiring pressure is less. higher. Oh, sorry, higher. lesser. Inspiring pressure is more, expiring pressure is lower. So that is something which we can tweak and adjust in a level 1 lab. Level 2 और level 3 में वो नहीं कर सकते, but उसमें हम क्या कर सकते हैं, there is a thing called auto CPAP. ये auto BiPAP. मशीन को लगा देंगे, मशीन एक प्रेशर में सेट हो जाएगा. इट्स एन एल्गोरिथम बेस्ड, मीन्स उसका सॉफ्टवेयर है. पेशेंट का फ्लो के हिसाब से वो अपना प्रेशर को सेटिंग कर लेगा और एरो खोल लेगा एंड इट रिमेन्स इन दैट. तो उसको में देख के वी कैन ऑल्सो प्रेस्क्राइब द पेशेंट कि हाँ आपको इसको इतना लगवाना है. बट माइंड यू द स्टोरी डज नॉट एंड देयर. वी ऑल्सो हैव टू सी हिज कंप्लायंस रिपोर्ट. सो विद दिस प्लेटफॉर्म आई जस्ट वांट टू से CPAP लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. कितना घंटे आपको ले रहे हैं आप, मिनिमम 4 घंटा एवरी नाइट and 70% of the nights means अगर 30 दिन का महीने में 21 days we have to use 21 nights with per night 4 hour minimum usage 4 and 21 remember it 4 hours 21 days. अगर उसने किसी ने इतना यूज किया then only effect दिखना शुरू हो जाएगा. Okay. I hope the audience they should remember that because buying a machine does not mean you cannot buy a machine that हमको तो फायदा नहीं है. अगर आपने उसको यूज ही नहीं किया सही से, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, obviously then you will have to. बट आपका कंप्लायंस जरूरी है. जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो उसको सही से यूज करेंगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा आपको. ओके, देयर इज एनीथिंग दैट यू फील दैट यू नो जो एक मिथ आप तोड़ना चाहते हो स्लीप के बारे में? अगर हम दिन में नहीं सोए, if we didn't sleep in the night, we can sleep in the daytime. That's the worst thing that we can do. I've got a patient जिसको रात को नींद नहीं आता था. बोलते थे आपको रात को नींद नहीं आ रहा है, देन यू शुड डू योर टेस्ट. नहीं, मैं तो दिन में सो लूँगा. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग. आपने अगर स्लीप का आपका लॉस हुआ है, सपोज यू हैव हैड लेस स्लीप इन द नाइट फॉर वन पर्टिकुलर डे फॉर सम इवेंट, यू डोंट स्लीप इन द डे टाइम, और एटलीस्ट आप सोते भी हो तो 1 घंटा सो के आप यू ट्राई टू गो टू बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. डे टाइम स्लीप इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. अगर आप लेते भी हो मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट्स के पावर नैप, दैट्स इट.
And There's called something called the circadian हाँ circadian rhythm जो है we have Rhythm. to follow the Yes. rhythm. ऐसा नहीं कि आप rise with the sun and sleep with the sun. Our bodies are made like that. Hormones are also Correct. produced at that point of time only. So अगर suppose someone is sleeping in the night with lights on, that also is something very wrong. We should not do it. Okay. Light should be off. और अगर suppose कोई night shift में काम करता है, during daytime when he comes to the room to sleep, he has to make it as dark as possible. Then only it will help. अगर आपने दिन में खिड़की खोल के सो रहे तो that is तो not मतलब- actual sleep because of whatever is said, sleep helps you to recover, right? It helps to recover. It helps to consolidate our brain memories. It increases our immunity. आपने देखा होगा अगर कोई बंदा बहुत उसका नींद का प्रॉब्लम हो गया है, Brain fogging होना शुरू हो जाता है. he will have issues with his immunity. एस्थमा पेशेंट का स्लीप एपनिया बहुत कॉमन है और ऐसे पेशेंट्स को अगर नींद भी नहीं आ रहा है then his immunity goes down. Correct. कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होगा उसका, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, सर्दी खांसी होगा, वो जाके उसका एस्थमा और खराब हो जाएगा. साइकिल है वो सारा. Cycle. It's a vicious cycle. Yeah. And then sleep apnea अगर ज़्यादा रहेगा then you will have hypertension, you will have diabetics. एक चीज़ और है, sleep deprivation से weight increase होता है. I was just coming to that point. Obesity. Can you elaborate a little more? Do sleep patterns affect weight gain? Yeah, very very much. Sleep apnea means your body is getting less oxygen. If your body is getting less oxygen, that means you are in a state of stress. आप stress में हो. Yeah. How does body react to stress? Body में cortisol hormone react होगा, मैंने produce होगा. Cortisol से body का sugar levels बढ़ता है, fat mobilization होता है. So fat generally comes from the periphery और आपके central part होता है body में fat deposition होगा. उसके बाद हमारा होगा body में एक sympathetic system जो body के emergency में body को Okay. face Alert करता करता है. हाँ, Okay. fight or flight Yeah. reaction. Yeah. That hormone gets activated. That hormone, besides other things, will also increase your sugar levels. So Okay. increased sugar levels means there is a chance of developing diabetes later on in your life because आपके body में बहुत sugar भर रहा है और इंसुलिन कितना काम करेगा, एक टाइम पे इंसुलिन काम करना बंद कर देगा, then you will develop diabetes also. Thirdly, there are two hormones, एक है leptin, एक है ghrelin. Leptin is satiety hormone है जिसमें हम हमारा Leptin is a satiety hormone means Okay. अगर वो उस हार्मोन से हमको लगेगा अच्छा, कि पेट satisfaction. भर गया, Right? पेट भर Yeah. गया, भूख मर गया, खत्म हाँ. हो गया. एंड ग्रेलिन इज द हंगर हार्मोन. Okay. ग्रेलिन हम लेंगे तो उसमें भूख बहुत ज्यादा लगता है. तो स्लीप से क्या होता है, ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ फूड स्लीप एपनिया में. स्लीप डिप्रीवेशन बेसिकली, इन स्लीप डिप्रीवेशन यू विल टेक So any kind of disorder, sleep disorders. नाइट आप सपोज नाइट में भी आपने स्लीप डिप्राइव कर दिया अपना, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ फूड. Oh, that's how I think I go to the kitchen in the night. या एंड उसके बाद आपका लेप्टिन का सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाता है. मींस लेप्टिन तो प्रोड्यूस होगा बॉडी में बट वो काम नहीं करेगा. सो यू विल नॉट फील फुल, आपको भूख लगता रहेगा, आप भूख ले रहे हो, आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, आपके बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, सो वेट गेन हो गया. सिमिलर रीजन और तो यह प्रॉब्लम होगा हाइपरटेंशन. सो स्लीप अपने पेशेंट्स जनरली हाइपरटेंसिव भी होते हैं एंड किसी लोगों का तो वो काम भी नहीं करता. दैट दिस ड्रग्स डोंट वर्क अनलेस अंटिल वी ट्रीट द Obesity. apnea. apnea. Okay. And unless to sleep apnea अगर आपने रिकवर ठीक करवा दिया, your weight will also go down, Automatically everything. the hypertension levels will also, the pressure level will also go down. Correct. And एक और डेंजर है the diabetes. Sympathetic overactivity, sugar levels बहुत हैं बढ़ गए, at one time you will develop diabetes also. And as sleep physicians, we also give a term known as quality of life. So what do you mean by quality of life? Quality of life means आप Good sleep. गुड स्लीप. उसके अलावा दिन में आपको बहुत नींद आ रहा है, यू आर हैविंग टायर्डनेस, यू आर अनएबल टू कंसंट्रेट. आप गाड़ी चला रहे हो वो भी आप नहीं कर पा रहे. यू आर अ गुड ड्राइवर, यू आर अफ्रेड टू ड्राइव बिकॉज यू नो दैट यू ड्राइव Can fall asleep. Yes. So the quality of life is gone. You are not able to sleep. You are sleeping in the night. You are sleeping in the daytime. You are falling tired. You are not able to work. You are not able to drive. You are not able to concentrate. And you are having mood disorders. तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सा रहेगा या डिप्रेशन होगा. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ Is always compromised. Yeah. Totally compromised. Solution is there in front of us only. Yes. एक स्लीप स्टडी करवा लो, स्लीप एपनिया है, go for a PEP or go for a mandibular device or go for weight loss or go for positional therapy. You will start seeing the changes. Yeah, before we finish, one thing I want to understand is 7 to 8 hours sleep enough or 5 or 6 भी चलता है? So remember, it depends on person to person.
The American Sleep Medicine recommends at least 7 hours of sleep. But with our lifestyle, uh, sometimes 5 hours is also enough, but at least try to sleep for 6 hours, and 6 hours at one go. Not कि दिन में 3 घंटा सो लिया रात को 3 घंटा सो लिया, that is not sufficient. We need to have at least 6 to 7 hours of sleep, and depending upon your age, again it's important. अगर आप if suppose someone is more than 50 years of age, his sleep requirements will come down. Will come down. Come down. Generally, as you age, I am seeing people around me, they because- sleep more. Your sleep requirements will come down because उनका deep sleep नहीं आता, कम आता है. Oh, And generally you have to sleep early in the night, and they wake up also early. तो India में possible तो है नहीं. We'll sleep at 10 o'clock, and then he will wake up at 4 o'clock in the morning. तो 10 o'clock से 4 o'clock मुश्किल से 3-4 घंटा, मैंने 5 घंटा सोया होगा वो. And when you are young, adolescence में at least 7 to 8 hours of sleep चाहिए. When you are small, when babies sleep, even babies sleep yeah, they even sleep longer. around 11 to 12 hours. 20 hours sleep, so the newborns sleep for 20 hours. So as we grow, the requirements will change. Someone has just come from a very 1 month of excess sleep deprivation. He will sleep more. But over a period of time, when the body's sleep requirements are met, खुद ब खुद कम हो जाएगा. So there's a balance between the sleep requirement centers in the body. कितना सोना है, कब सोना है, वो balance होता रहता है with time. One simple advice you would like to give our audience. Maintain a sleep hygiene. Very, very important. Mind को सोने से आधा घंटा पहले mind को off कर दो. That's it. You can do 1 or 2 days. You can give. You can try unconventional things, but please reduce screen time and coffee and tea. Something just try to avoid it after 5 o'clock. Those will be very good. And the weekend में हम करते हैं ना, don't make it a habit of going out every weekend, staying awake till around 3 o'clock in the night. That will eventually Or catching up creep on sleep during the weekends. catching Lost up with sleep. yeah. of the रात को 3 बजे सो के सुबह Sunday 12 बजे सोना, that is something don't try to avoid it. Sleep hygiene is very important, and try to follow a routine. That will help you a lot as you progress. The needs are very high. We need to take care of ourselves, of our children. Their needs are different. Parents' needs are different. Our need is also different. So every individual sleep quality and sleep requirements are different. We cannot measure everyone in the same yardstick. What we can measure is maintain a hygiene, prevent smartphone uses at least 30 minutes before sleep, and some diet modifications. That will be great. For today, I think this is fine. Okay. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Rahman, for joining us today. Thank you so It much. was ma'am. very informative and सबको समझने आने वाला जैसा conversation था. I hope the audience has taken note of whatever the doctor has said. So it's not just about snoring. You might be having some symptoms which are not visible. If you are sleep deprived, please do not wait. Go see a sleep specialist. You could go get yourself tested. Sleep studies aren't dangerous. They will help you not only to diagnose your sleep disorders, but also, to recognize whether you have any comorbidities. Okay, my only suggestion and my only advice to all my audience is, please take care of your health, is because if you sleep better, you live better. From Slumber Sense Global, this is Nadia Sheikh signing off. Please follow us on LinkedIn, Instagram, and YouTube. See you.